Welcome or welcome back, students. This is Ayesha Khan, your UGC NET English faculty at Super Coaching by Testbook. Welcome to another session wherein we are going to continue with the question that we've been solving. Please remember, all these questions were asked in your September 4 exam. So technically what happened is, this year after the June exam was cancelled, we had a total of 3 exams. There was a Shift 1 exam that was held on 21st August. Another Shift 1 exam also held on the same date, okay, Shift 1 and Shift 2, plus there was an exam that could not be conducted in some of the centers for Shift 2 paper. That exam was reconducted on 4th September 2024. So currently we are solving 100 questions from your 4th September paper. Please remember, we have already covered all the 100 questions from Shift 1 and all the 100 questions from Shift 2 paper. So technically हमने 200 questions cover कर लिए हैं. After we cover another 100 set of questions, we will be done with 300 questions. And these 300 questions should be your starting point when you prepare for your December 2024 cycle, because ये आपका जो है एक तरह से मॉडल बन जाते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाते हैं when you prepare for your December 2024 UGC NET JRF cycle. ठीक है? Good afternoon, everyone. Good afternoon. I've got Ravi is here, Isha is here, Rani is here, Ketan is here as well. Good afternoon, everyone. How have you people been? पहले बता दीजिए, how have you people been? How was Dussehra? How was your weekend? उसके बाद we'll begin. Nayana is here. Good afternoon, Nayana and Monica as well. हाँ जी, पहले बता दीजिए how was your weekend, and then we'll begin with your class. Did you celebrate Dussehra? हाँ जी. Good afternoon. Shivanika is here as well. चलिए, we'll begin with the session then. अच्छा, before we begin, आप सोच रहे होंगे ये स्क्रीन पर जो आपके पास कोट आ रहा है, क्यों आ रहा है? Why is this quote here? So the quote says, the line says, schools serve the same social function as prisons and mental institutions. That is to define, classify, control and regulate people. Now this quote was given by a very famous French thinker, by a very famous French philosopher, a very famous French thinker or philosopher. And today, that is 15th October, also happens to be the birth anniversary of this particular philosopher. By the end of the session, you need to tell me the name of this philosopher. I have the image here for you people. The quote says, again, let's have a look at the quote. The quote says, schools serve the same purpose that many other institutions like mental and institutions and prisons serve. What is the purpose? The purpose is to define, to classify, to control and to regulate masses, to regulate the people. This is a quote given by who? He was a French philosopher. He happens to be born on 15th October. Chaliye. With that, no, he's not Louis Althusser. Rani, this is not Louis Althusser, but you'll have to tell me by the end of the session. ठीक है? With that, we will begin with the session. Let me just remind you, आपकी जो free classes हैं, उनकी timings रहती है 12 noon, जैसे अभी आपकी class हो रही है on Tuesday, Thursday and Saturday. 3 days we have our classes. ठीक है? उसके अलावा you have your 2 PM classes, which is your free master class. ये आपकी free master class होती है. Free master classes take place on the app of Testbook. ठीक है? ये आपकी completely free classes हैं. ये आपकी कहाँ मिलेंगी आपको? Testbook की app पर. You can simply go to the description box. इस वीडियो का जो description box है वहाँ पर आपको पूरी master classes का जो playlist है उसका link मिल जाएगा. Then you have your 6 PM classes जो आपकी take place करती है on the English channel of Testbook. What is the English channel? The English channel is UGC NET classes in English Testbook. You can simply Google this name of this channel on YouTube. You will find the channel. Please make sure to subscribe to this channel because 6 PM हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी literary terms की जो series है वो वहाँ पर चल रही है. ठीक है? लिटरेरी टर्म्स का जो आपका सीरीज़ है, लिटरेरी टर्म्स और यू कैन से लिटरेरी डिवाइसेस, ये सीरीज़ आपकी चल रही है 6 PM क्लासेस में ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे एट दिस पर्टिकुलर चैनल. ठीक है? चलिए, with that we will begin. Exactly, Aman, that is the correct answer. Good afternoon everyone. Good afternoon. ठीक है? Let me also remind you, जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हैं उनके आपको PDF notes कहाँ पर मिल जाते हैं? You get the PDF notes on my Telegram channel, which is Ayesha Ma'am _Testbook. इस चैनल पे आपको PDF notes मिलते हैं ऑफ ऑल द फ्री क्लासेस, प्लस वट एवर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो आपकी आती हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर मैं नोटिफाई करती हूँ. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड आस्किंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ पर आपके पास पोल की फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यू विल हैव डेली क्वेश्चंस नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है? आपके पास डेली
क्वेश्चंस हुआ करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे करके हम क्या क्या करेंगे, एवरी डे वी विल टैकल वन क्वेश्चन मोस्टली अबाउट अ रीसेंट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, डेली पीडीएफ्स ऑफ ऑल वाईटी सेशंस, डिस्कशन, डाउट सेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मी दैट इज योर टीचर, प्लस क्विजेज एंड पोल्स भी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द सेम चैनल, ठीक है। द चैनल इज आयशा मैम टेस्टबुक। All right. चलिए, let's move on and start with the first question. Your first question from your September 4 paper asks you that you have a list of 5 novels. The five novels are, the first novel is The Moonlight. The next novel is The Time Machine. Next comes Great Expectations, The Golden Gate, Brave New World. Now the question says, which of the following can be classified as science fiction? Which of these novels can be classified, can be labeled as science fiction? You have to tell me the answers. यहाँ पे आपके पास कोई 2 novels हैं which can be labeled as science fiction. हाँ जी, start answering please. Please start answering questions. हाँ जी. By Google I meant search, ठीक है. When I say Google, Ketan, what I mean is you can simply search this channel on YouTube, ठीक है. Google is now less of a name of a browser, more of a verb now. It's more of a verb. It originated as a noun. Now it is more of a verb. So when you mean you need to look something up, when you say you need to look something up on internet, that is when we say Google it. Look something up on internet, that is Google it. So yes, you can technically Google something even on YouTube, ठीक है. All right. Chaliye, the first question says, which of these novels can be categorized as sci-fi or science fiction novels? Which of these novels can be categorized as sci-fi or science fiction novels? हाँ जी. ठीक है. Okay. Let's have a look at the answer. देखिए, सबसे पहले आपकी नॉवल आ जाती है द मूनलाइट. नाउ मूनलाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल. फेमिनिस्ट नॉवल आपकी आ जाती है, विमेंस के बारे, विमेन डिफिकल्टी जो फेस करती है उसके बारे में नॉवल है, बट नॉट अ साई-फाई नॉवल. सेकंड नॉवल दैट यू हैव इज टाइम मशीन बाय एच.जी. वेल्स. ऑब्वियसली आपकी ये नॉवल आती है अबाउट टाइम ट्रैवल, ठीक है. तो टाइम ट्रैवल की जो नॉवल्स आती हैं, स्पेस ट्रैवल की जो नॉवल्स आती हैं, ऑल दीज नॉवल्स कैन बी कैटेगराइज अंडर द अम्ब्रेला टर्म विच इज साई-फाई और साइंस फिक्शन. योर थर्ड ऑप्शन इज Great Expectations, definitely a very very important realist novel, definitely a very very important realist novel, but not a sci-fi novel. In fact ये आपके डिकिंस की second last novel है, ठीक है. ये आपके डिकिंस की second last novel है. It is a realist novel, not a science fiction novel, ठीक है. Then you have The Golden Gate, जो किसकी नॉवल है? This is the first novel by Vikram Seth. This is the first novel by Vikram Seth, the Indian writer. ठीक है. Again, ये नॉवल आपकी वर्ड्स की फॉर्म में लिखी गई है. Important नॉवल है, लेकिन this is not a science fiction novel. This is a novel written in verse. Finally, you have Brave New World, which is a novel by Huxley, by Aldous Huxley. ठीक है. This novel, besides being a dystopian novel, is also a science fiction novel. ये आपकी futuristic science fiction novel आ जाती है by Aldous Huxley. So the correct answer here will be The Time Machine by H.G. Wells. And you have The Brave New World by Huxley. देखो आपका आंसर क्या बन जाएगा? Your answer is B and E, which is here. B and E is your correct answer. You have H.G. Wells' novel The Time Machine, and you have Brave New World by Aldous Huxley. ठीक है. चलिए देख लेते हैं एक बार. The Time Machine is an 1895 dystopian novel, post-apocalyptic novel. It says post-apocalyptic science fiction novel. Now what is apocalypse, students? What is apocalypse? See, the time that will come once the world ends, the end of the world novels. Suppose a catastrophic disaster has taken place. ठीक है. Now after this disaster, the world is about to end. Such novels that deal with such themes, such subjects, they can be classified as apocalyptic novels. This is a post-apocalyptic science fiction novel by H.G. Wells, published in the year 1895. Please remember, this novel also popularized the concept of time travel that we so commonly see in movies and shows these days. It was this novel that gave us the term time machine. For the first time, the term time machine was used in this novel by H.G. Wells. ये भी question बन सकता है कि who was the first author to use the term
Time Machine. The first author was H.G. Wells. ठीक है. Besides this, the second option is Brave New World. Obviously, a dystopian sci-fi novel by who? By Aldous Huxley. ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. जो तीन ऑप्शन हमने नहीं कंसीडर किए हैं उनको भी देख लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट आपका था द मूनलाइट. द मूनलाइट इज अ 1946 novel about the difficulties of women. Who was the writer? The writer was the Anglo-Irish writer. The name of the writer is Joyce Carey. Joyce Carey is also known for two other major novels, which are Mr. Johnson and The Horse's Mouth. Please remember, now you have to remember the name of three titles by this author. You have to remember the names of three novels by this author. This is an Anglo-Irish author named Joyce Carey. The novels are Mr. Johnson, then you have The Horse's Mouth, and finally you have The Moonlight, which is a novel about the difficulties that women face in a patriarchal society, in a patriarchal setup. Then we come to Great Expectations by Charles Dickens. It is his penultimate completed novel. What is penultimate, students? Penultimate. There's a term which says penultimate. Penultimate means second last. Second last. Okay? So Great Expectations happens to be the penultimate novel by Charles Dickens. Then you have The Golden Gate, obviously the first novel written by Vikram Seth, who is famously known for novels such as An Equal Music, also known for another novel called A Suitable Boy. A Suitable Boy. ठीक है? चलिए, with that we will move on to the next question. Next question for you people is, okay, next question, you have to match the publication years. Basically आपको novels को match करना है with their publication years. The works are The Wildflower, Enchantment and Sorrow, Tin Flute and Garden in the Wind. You have to match these works with their publication years. The Wildflower, Enchantment and Sorrow, Tin Flute and Garden in the Wind. Okay, Reena says, ma'am, can you tell us about the other channel that you were talking about? Reena, there's an English channel, ठीक है? There's another channel जिसमें आपका UGC NET की classes होती हैं. UGC NET classes in English super coaching, textbook super coaching का ये channel है. You can find this channel, ठीक है? Once you find this channel, यहाँ पर भी आपकी classes होती हैं at 6 PM, ठीक है? On what days? At 6 PM you have your classes here on Wednesday and Friday, ठीक है? यहाँ पर आपकी जो literary terms की series है वो run कर रही है फिलहाल. So this is where you have those classes. Now you need to match these novels with the publication years. ठीक है? Let's begin with the first. Penultimate is the second last novel. Exactly, Rani, exactly. ठीक है, देख लेते हैं आपका आंसर. देखिए, सबसे पहले आप मैच करोगे The Wildflower को with 1970. ठीक है. Then you have Enchantment and Sorrow published in the year 1984, followed by Tin Flute, जो first novel है published in the year 1947, and lastly आपकी आ जाएगी Garden in the Wind published in the year 1975. चारों ही novels आपकी किसकी हैं? Gabriel Roy, who was a Canadian author from Saint Boniface, उनकी ये चारों novels आपके पास आ जाती हैं. Gabriel Roy को हमने आपके जो foundation batch है वहाँ पर cover भी किया था. Remember, foundation batch में हमने बात भी की थी Gabriel Roy की. ठीक है, Gabriel Roy की first novel was called The Tin Flute, published in 1945, followed by Wildflower in 1970. Then comes Garden in the Wind in 1975. Nicely आपकी आ जाएगी Enchantments and Sorrow, published in the year 1984. ठीक है? Yep, that's your correct answer. Let's move on to the next question. Next question says, important statement that you have here by a certain writer, by a certain Indian writer rather. The question says, which of the following poets described himself as not an Indian poet, but a poet writing in a universal language of poetry, of feeling, of love and hate and sex. This poet very famously claimed that I cannot be limited by the label, by the title of being an Indian poet. Yes, I am definitely an Indian poet. Yes, I definitely happen to be a poet who comes from India, but I am also a poet who writes in the language of love, hate, sex, poetry, all these languages. So technically, he said, I am a universal poet. I am a poet who writes in the universal language of poetry. That language cannot be categorized, that language cannot be limited or restricted to a certain country. The question here has 4 options. Your options are A.K. Mehrotra, Arvind Krishna Mehrotra, you have K.K. and Daruwala, Jayant Mahapatra and Shiv K. Kumar. Acha, you also need to tell me which of these Indian poets passed away recently. Which of these, students, which of these Indian poets very recently, in fact last month, September 2024 mein hi, which of these Indian poets passed away recently?
हाँ जी, पहले अपना मेन क्वेश्चन आंसर करिए कि स्टेटमेंट किसने दी है, कौन से पोएट हैं, उसके बाद यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज इंडियन पोएट्स पास्ड अवे रिसेंटली. Exactly, Naina says, ma'am, दारूवाला passed away recently, which is actually your correct answer. Exactly, he passed away recently. Last month ही उनकी डेथ हुई है ना. यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, the answer is the statement was actually given by A.K. मेहरोत्रा. अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा आपके एक पोएट हैं, थे नहीं हैं, ठीक है. he is a poet, Indian poet हैं. This poet has also compiled a very important anthology for Indian poets. तो उन्होंने ये statement दी है. The statement says, I cannot be classified, I cannot be restricted, I cannot be limited by the title of being an Indian poet. Definitely, my nationality तो Indian है ही, but I also happen to be a poet who writes in a universal language of poetry, and that language of poetry includes the language of sex, love, poetry, beauty, hatred, all these feelings, ठीक है. अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा writes a poetry in which all the images are dominant. He has published 6 collections of poetry in English language and 2 translations. He has also published a poetry collection called The Absent Lover and Songs of Kabir. He has also compiled a very famous anthology called the Oxford Indian Anthology of 12 modern Indian poets, published in the year 1992. It was Mehrotra who said, I am not an Indian poet, but a poet writing a universal language of poetry, of feelings, of love and hate and sex. ठीक है. A.K. Mehrotra, or simply Arvind Krishna Mehrotra, born in the year 1947, easy to remember, is an Indian poet, ontologist, literary critic and translator. ठीक है. चलिए, next question for you people is, अच्छा उसके अलावा जो बाकी 3 poets हैं उनकी भी discussion कर लेते हैं. Your other 3 options are K.K.N. Daruwala, Jayant Mahapatra and Shiv K. Kumar. So, K.K.N. Daruwala, K.K.N. stands for Nasarwanji Daruwala, ठीक है. See, he died on 26 September 2024. He died on 26 September 2024. He passed away recently. Was an Indian poet and short story writer in English, ठीक है. He was awarded the Sahitya Academy Award as well, ठीक है. He was awarded the Sahitya Academy Award as well for his poetry collection. The collection was called The Keeper of the Dead. K.K.N. Daruwala passed away recently. Poetry collection The Keeper of the Dead was awarded the Sahitya Academy Award. Then next poet आपके पास आते हैं Jayant Mahapatra. Jayant Mahapatra becomes important for one important reason, that he was the first ever poet जिनको Sahitya Academy Award दिया गया था for the field of poetry. He was the first Indian poet to win a Sahitya Academy Award for the field of English poetry. ठीक है, कौन से poems हैं इनके जो famous हैं? Hunger is one such poem. Another poem is Indian Summer. This is Jayant Mahapatra. Then you have Shiv K. Kumar. Was an Indian English language poet, playwright, novelist and short story writer. These are the 3 other options जो आपके पास आ जाते हैं. तीनों ही writers important हैं, ठीक है. Yes, A.K. Mehrotra is a correct answer, but you also need to look at the 3 other options. Okay. Next question, students. आपका next question से पहले मैं आपको बता देती हूँ. All these questions will be your model, your starting point for your December 2024 preparation, ठीक है. Because आपकी जो final answer keys हैं वो भी आ गई हैं अब. सो मोर और लेस आपको अपना जो स्कोर है वो भी पता लग ही गया होगा. वी डू एक्सपेक्ट जो आपके रिजल्ट्स हैं वी डू एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे कमिंग वीक में, ठीक है. विद इन लेट्स से 5 days आपके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, ठीक है. बट लेट्स नॉट बी ब्लाइंड टू द डिलेज जो एनटीए करता है. तो हो सकता है रिजल्ट डिले भी हो जाए. दिस इज वाई आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो प्रिपरेशन है अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए. इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स दैट आई हैव, ये आपका पूरा फाउंडेशन बैच है फॉर दिसंबर, ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज़ द कोड AYESHAK. वंस यू यूज़ दिस कोड आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है ऑन योर फी प्राइसेस. या जो आपका जो कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में रन करता है, ठीक है. तो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एट व्हाट टाइम? एट 4 PM. 4 PM एवरी डे यू हैव योर लाइव क्लासेस. बट सेम ही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिलती हैं. इफ़ यू वांट टू वॉच द क्लासेस, अटेंड द क्लास इन रिकॉर्डेड मोड, वो भी आपको मिलता है. बिसाइड्स द क्लासेस यू गेट द PDF फाइल्स ऑफ ऑल द नोट्स. आपको PDF फाइल्स मिलती हैं सारे ही नोट्स की, ठीक है. कोई भी डाउट्स या डिस्कशंस होती हैं आपकी, वो मैं टैकल करती हूँ इन द पेड क्लासेस ओनली. चलिए, with that we will move on to the next question. Next question for you people is, your next question is, चलिए next question is, who introduced the concept of biopower? See, इन्हीं के एक कोट से आज का हमने सेशन भी स्टार्ट किया था. We started today's session with a beautiful, a very powerful rather, not even beautiful, a very powerful quote,
a very radical and powerful quote by this thinker, by this philosopher. We started the class with a quote by this powerful thinker. इन्हीं की आज birth anniversary भी है, ठीक है, आपके same ही thinker की आज birth anniversary भी है. He happens to be French. Now he gave us the concept of biopower. You have to tell me the name of the philosopher. Your options are Edward Said, Chinua Achebe, Walter Benjamin or Michel Foucault. Biopolitics or biopower, whichever you like, ठीक है. Exactly. Simran says, ma'am, the answer should be Michel Foucault, which is 4, which is actually a correct answer. Very good, Reena, Simran, Rani and Monica. Your correct answer is Michel Foucault. ठीक है, Michel Foucault, who was a French theorist. ठीक है, इनको आप कवर करते हो अंडर स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. इनफैक्ट इनके कुछ आइडियाज साइको एनालिसिस के लिए भी बोरो किए जाते हैं, फॉर साइको एनालिसिस, राइट. एंड वी डू कवर हिम अंडर, समटाइम्स वी कवर हिम अंडर gender studies as well. ठीक है, this is Michel Foucault for you people. Michel Foucault gave us the concept of biopower. ठीक है, biopower होता क्या है? It refers to various means by which the modern nations या modern states हैं वो अपनी population की जो health है उसको control करती हैं. Basically क्या? Biology plus power. So how is power used by the states? How is power used by the governments to actually regulate the physical health of its subjects, of its population? उसको बोलते हैं biopower. ठीक है. In Foucault's work, it has been used to refer to the practices of public health, regulation of heredity and risk regulation. Foucault first used the term in his lecture course at the Collège de France, and the term was then used in his print form in the work The Will to Knowledge, which was the first volume of his work, The History of Sexuality. Please remember, The History of Sexuality is a very important work by Michel Foucault. उसका first volume आपके पास क्या आता है? The first volume is called The Will to Knowledge. इस वाले volume में इन्होंने first time ये term use किया था called biopower. Michel Foucault was a French historian and philosopher who was also an author, literary critic, political activist and teacher. All right. चलिए. Next question. Who wrote A Defense of Hindu Theism? You have another work. The work is Who wrote The Defense of Hindu Theism? Question आपका आ जाता है from Indian literature. You have a certain writer. In fact, besides being a writer, he was a very important social reformer. ठीक है? He gave us a work called A Defense of Hindu Theism. Basically, what was he doing in this work? He was actually he was writing a work in favor of, to advocate the religious beliefs of the Hindus. ठीक है? Is the answer M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, Sri Aurobindo, Raja Ram Mohan Roy or B.R. Ambedkar? हाँ जी. ठीक है. Monica says, ma'am. Monica, for this you can what you can do is either you can consult your counselor or you can just text me separately. ठीक है, एक बार मुझे क्या करना, टेलीग्राम पे you can text me separately and I will answer your query. अच्छा ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? The person who gave us the work called A Defense of Hindu Theism. The answer will be राजा राम मोहन रॉय. अच्छा, does anybody know राजा, ये जो लेबल है, जो ये टर्म है राजा, who started using this term? Because इनका complete name was राम मोहन रॉय. His name was Ram Mohan Roy. ठीक है? Raja is not a part of his name, but there was another very important person who used this term with Raja Ram Mohan Roy's name, and therefore अब जो नाम हमें पता है हम क्या बोलते हैं, Raja Ram Mohan Roy, but his complete name was only Ram Mohan Roy. So who was the first person, the first historical figure who used the term Raja for Raja Ram Mohan Roy? His name was exactly, Ketan says, ma'am, the term was actually used for him by Akbar, the Mughal king Akbar. ठीक है? Defense of Hindu Theism is a book by Raja Ram Mohan Roy, published in the year 1817 in a response to the attack on idolatry in Madras. Look at this. The title says A Defense of Hindu Theism in reply to the attack on advocacy for idolatry at Madras by Ram Mohan Roy. His real name was only Ram Mohan Roy, but the term Raja was used with his name by the Mughal emperor Akbar. ठीक है? अकबर ने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ किया था इनके लिए. ओके.
Also, Raja Ram Mohan Roy has also famously been called the father of English Renaissance. Please remember this as well. यहाँ से भी आपका question बन सकता है. Raja Ram Mohan Roy has also been called the father of English Renaissance. ठीक है? He was also one of the founders of the Brahmo Samaj, founded in 1828, and he was given the title of Raja by the Mughal king Akbar. ठीक है? चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ईयर्स. ठीक है, पब्लिकेशन ईयर्स के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी कंस्ट्रक्ट करनी है. सीक्वेंस बेसिकली आपको मुझे बताना है. ठीक है, ऑर्डर बताना है. अच्छा, वेरी सून वी विल हैव अ सेशन जिसमें हम क्या करेंगे, आपका जो शिफ्ट 1 का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर है एंड शिफ्ट 3 का, जो आपका शिफ्ट 3 तो नहीं है टेक्निकली, September 4 वाला जो आपका पेपर है, तीनों ही पेपर्स के हम यूनिट वाइज क्वेश्चन देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस यूनिट में से आए हैं. ठीक है, यूनिट वाइज हम क्वेश्चन डिवीजन देख लेंगे हर एक शिफ्ट की, सो दैट यू पीपल नो कि किस यूनिट पे आपको ज़्यादा काम करना है, किस पर आपको कम टाइम स्पेंड करना है. तीनों ही यूनिट्स के हम कंपेयर करेंगे. बट फॉर नाउ, arrange the following works in the orders of their publication years. The works are Animal Farm. The second work is A Burnt Out Case. ठीक है, your next work is The Mill on the Floss, The Book of Snobs and A Tale of Two Cities. ठीक है, ये आपके 5 ऑप्शंस आ जाते हैं. प्लीज स्टार्ट आंसरिंग देम. ओके, Suraj, I would really like you people to stick to the questions which are relevant here. ठीक है, I am here to teach you, to help you to clear your UGC NET JRF exam. इसके beyond अगर आप questions पूछेंगे, I will not even look at them. ठीक है, please stick to the questions which are relevant for our subject matter here. चलिए, which of these are you to arrange these works in the order of the publication years? ठीक है, okay, most of you say the answer should be B. ठीक है, देख लेते हैं. You people say the answer should be B. ठीक है, exactly. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे The Book of Snobs. Can somebody tell me राइटर कौन है Book of Snobs के? Can somebody tell me who is the writer of Book of Snobs? The Book of Snobs is written by William Makepeace Thackeray. William Makepeace Thackeray, who is also known for his work, the famous novel Vanity Fair, the novel without a hero. Remember Vanity Fair by William Makepeace Thackeray. ये आपके कहाँ के राइटर हैं? ये आपकी विक्टोरियन एज के राइटर आ जाते हैं. After that you will have A Tale of Two Cities by who? By Charles Dickens. उसके बाद आपका आएगा The Mill on the Floss by George Eliot. Finally you have Animal Farm by George Orwell and A Burnt Out Cases by Graham Greene. ठीक है, देख लेते हैं. The Book of Snobs is a collection of satirical works by William Makepeace Thackeray, published in 1848, followed by Dickens's novel A Tale of Two Cities, which is, by the way, a historical novel. क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहता है यहाँ पर? आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहता है. देन यू हैव द मिल ऑन द फ्लॉस, विच इज नॉवल बाय जॉर्ज एलियट, फॉलोड बाय एनिमल फार्म, विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1945. इट इज़ एक्चुअली एन एलेगरी. ठीक है, जिस यहाँ पे आपके पास क्या आता है? एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स आते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक एनिमल्स आते हैं. बेसिकली क्या करते हैं जॉर्ज ऑरवेल? ही एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स हु लिव on a farm, and these animals start behaving and talking like humans. ठीक है, and they even resist, they even have a revolution, they rise against their human farm owner. ठीक है, the novel is Animal Farm, which is an allegory of the Russian Revolution. Finally you have Graham Greene's novel A Burnt Out Case, published in the year 1960. Exactly. Next question for you people is, the line drop drop slow tears is an example of what? What kind of meter has been used in the lines drop drop slow tears? Dactyl, Pyrrhic, Spondy or Trochai? हाँ जी. Which of these is the correct answer, students? The phrase is drop drop slow tears. Drop drop slow tears. अच्छा, एक और चीज़ हम करने वाले हैं वेरी सून. वी आर गोइंग टू हैव एन एंटायर क्लास ऑन मीटर्स, जितने भी आपके पोएटिक मीटर्स होते हैं, आयम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ऑल दीज मीटर्स जो आपको काफ़ी ज़्यादा डॉन्टिंग लगते हैं व्हेन यू हियर द टर्म्स. ठीक है, बिकॉज आपको पास हर पोएम्स में क्या आता है? डिस्क्रिप्शन आता है दैट दिस पोएम इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर मीटर. सो वी विल हैव एन एंटायर सेशन जिसमें हम सारे मीटर्स डिस्कस करने वाले हैं. ये भी आपका सेशन कहाँ होने वाला है? ऑन द इंग्लिश चैनल. ठीक है, इसीलिए इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बिकॉज वहाँ पर आपके पास पूरी सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ में ही हम सारे जो मीटर्स हैं, पोएटिक मीटर्स हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं. वहाँ पर हम ये डिस्कशन करेंगे इन डिटेल. द आंसर हियर इज स्पॉन्डी. एग्जैक्टली, स्पॉन्डी में बेसिकली क्या होता है? स्पॉन्डी मीटर इज़ अ रेयर टाइप ऑफ पोएट्री मीटर जिसमें आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 स्ट्रेस सिलेबल्स एक साथ आ जाते हैं. जैसे कि आपके पास और एग्जाम्पल्स क्या है? बस स्टॉप, टूथ एक, बुक मार्क, चाइल्डहुड, वुड चक, ड्रॉप ड्रॉप. ठीक है,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, या केतन सेज मच नीडेड सेशन. आई डू नो यू पीपल हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी अदर इंग्लिश वर्क इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. मोस्ट कॉमनली यूज आपका जो मीटर है वो यही रहता है ना. तो वील लुक एट द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, ग्लोबलाइजेशन इज एंटीथेटिकल टू वॉट. देखिए एंटीथेटिकल क्या होता है, द टर्म इटसेल्फ सेज एंटीथेटिकल विच मीन्स ऑपोजिट, विच मीन्स ऑपोजिट. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एज द टर्म सजेस्ट, ग्लोबलाइजेशन इज when the world becomes a small village, when everything in the world is in a form of interaction with each other, right, where the boundaries of nations collapse, where the boundaries of nations collapse, right. We do not think of the world in terms of boundaries of nations, rather we think of the world as one world, as a huge village. ठीक है. Boundaries of nations collapse, nationhood का idea क्या करता है, collapse हो जाता है, तब जाकर आपका ग्लोबल वर्ल्ड का, ठीक है, वो वाला आइडिया आता है ग्लोबलाइजेशन. विच ऑफ दीज आइडियाज आर एंटीथेटिकल और ऑपोजिट्स टू ग्लोबलाइजेशन, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है. हाँ, मोस्ट ऑफ यू से मैम दी आंसर शुड बी 4 विच इज सी एंड ई. देखो सबसे पहले आपका ऑप्शन आएगा दी कल्चर मूवमेंट ऑफ कैपिटल. अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें आपके पास पूरे ग्लोबली हम क्या करते हैं, आइडियाज़ को, नॉट जस्ट आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को, हर चीज़ का ट्रेड करते हैं, हर चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, सो दैट द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर एज अ होल. ऐसा नहीं है कि इंडिया का आइडिया सिर्फ इंडिया में ही रहेगा, नहीं. इट विल बी ट्रांजैक्टेड. बेसिकली क्या करेगा, वो ट्रेड करके दूसरी कंट्री में जाएगा, दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इंडिया में आएंगे. सो अ ट्रेड ऑफ आइडियाज़, अ ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, अ ट्रेड ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आपका फर्स्ट आइडिया नहीं रहने वाला है. क्यों नहीं रहने वाला है, द आइडिया इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. जितनी ज़्यादा कैपिटल मूव होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, तो वो ग्लोबलाइजेशन को इन्हांस ही करेगा, उसके अगेंस्ट नहीं है. Next is the movement of commodities. Commodities are what? Things, objects that can be sold and bought. Now, globally जब आपकी चीज़ें सेल की जाती हैं, बाय की जाती हैं, इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, दैट एक्चुअली इनेबल्स, इट एक्चुअली फर्दर्स द गोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो आपका ये भी एंटीथेटिकल नहीं है, रादर इट सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट इज cultural nationalism. The term here is nationalism. So when we focus on the culture of one nation, this is actually antithetical to globalization, because globalization का idea क्या है, that everything should be shared globally, internationally, but यहाँ पर nationality का ज़्यादा focus है, इसीलिए आपका ये antithetical या opposite हो जाता है. नेक्स्ट इज पीपल. ऑब्वियसली ये तो आपका करेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज सी ग्लोबलाइजेशन इज डेफिनेटली अबाउट पीपल. ठीक है, तो ये आपका एंटीथेटिकल नहीं है. नेक्स्ट इज नार्सिसिज्म. नार्सिसिज्म क्या होता है, that obsession that you have with your own self. ठीक है, when you have a lot of focus on your own self, your own desires, your own needs. अगर ये वाली जो टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एक तरह से स्लो डाउन हो जाएगा. तो ग्लोबलाइजेशन विल बी अगेंस्ट टू थिंग्स, नार्सिसिज्म एंड इट विल ऑल्सो बी अगेंस्ट कल्चरल नेशनलिज्म. तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड ई. ओके, सी एंड ई इज योर करेक्ट आंसर. देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, companies and governments around the world, not around nations, around the world, around the globe. ठीक है. Cultural nationalism is a form of nationalism that focuses on the importance of a nation's culture, language, religion and ethnicity. Therefore, this is anti-globalization. Similarly, narcissism is a condition that involves an excessive focus on oneself and one's own needs. Therefore, this is also antithetical to globalization, antithetical to the process of globalization. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आयरिश प्ले राइट. बेसिकली यू हैव अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन अबाउट द नेशनैलिटी ऑफ द प्ले राइट्स. यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट द nationality of the playwrights. Nationality of the playwrights. Your options are Oscar Wilde, G.B. Shaw, George Bernard Shaw, J.M. Synge, John Millington Synge, Oscar Wilde and Harold Pinter. हाँ जी, एग्जैक्टली. मोस्ट ऑफ यू से मैम दी आंसर शुड बी हैरोल्ड पिंटर, जो आपका करेक्ट आंसर भी हो जाता है. देखिए, सबसे पहले आपके आते हैं G.B. Shaw, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, द वेरी फेमस प्ले राइट है ना. ये आपके आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, पिग्मेलियन, इन नॉवेल्स के प्ले राइट्स हैं. मैन एंड सुपरमैन के प्ले राइट हैं. ठीक है. G.B. Shaw वॉज डेफिनेटली आयरिश. ये आपके सोशलिस्ट थिंकर थे. बाय द वे, ही वॉज ऑल्सो अ हार्ड कोर सोशलिस्ट. ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फेबियन सोसाइटी.
He was a member of the Fabian Society. He also wanted to reform the English alphabet. He wanted to reform, make changes, improve the English alphabet. Remember, this was G.B. Shaw for you people, writer of such works as, writer of such plays as Arms and the Man, which is an anti-war play. Then you have Pygmalion. ये जो आपका प्ले है ये इस सब्जेक्ट पे ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में. देन यू हैव कैंडिडा, यू हैव मैनी मोर प्लेस, ठीक है. देन यू हैव जेम्स सिंज, ये आपके आयरिश प्ले राइट थे, एसोसिएटेड विद द आयरिश रिवाइवल, आयरिश केल्टिक रिवाइवल जो हुआ था उसमें इनका काफ़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. इनके काफ़ी सारे प्लेस स्टेज किए जाते थे एट एबी थिएटर विच वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द Irish Celtic revival. Then you have Oscar Wilde, definitely an Irish poet, playwright, novelist, ठीक है. आंसर आपका क्या आ जाएगा? Harold Pinter, very very important playwright. इनके plays को categorize किया जाता है as the Harold Pinter was a British playwright, ठीक है, screenwriter, director and actor. इनके काफ़ी सारे major plays हैं. Most of his plays are categorized as comedy of menace. Please remember Harold Pinter was also a Nobel laureate. उनको Nobel Prize भी दिया गया था, ठीक है. तो Harold Pinter was not Irish, rather he was English. This is Harold Pinter for you people. This is James Synge, John Billington Synge, Irish playwright थे आपके, literary revival के काफ़ी important major figure हैं. G.B. Shaw, George Bernard Shaw, आपके ये भी आपके Irish playwright हैं. And you obviously have Oscar Wilde, playwright, novelist, poet, everything, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इज अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट, इनकी ही बुक मैंने आपको शेयर भी की है इन द टेलीग्राम ग्रुप, है ना, इन द टेलीग्राम चैनल. अगर आप मीडिया फाइल्स के अंदर जाके देखोगे, आई हैव शेयर्ड अ बुक अबाउट बाय दिस राइटर, ठीक है. इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो वहीं से आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एल्बर्ट, द ईयर्स 1550 to 1630 कैन बी कैटेगराइज्ड एज विच एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इज इट द रेनेसांस? Is it the age of Elizabeth? Is it the age of Milton? Or is it the age of Chaucer? Basically, you have a question जिसमें अगर आपको literary timeline आपकी clear है, you can easily answer this question. If you know the literary timeline, you can answer this question. Paid class में हमने क्या किया है? Paid class में जो जितनी भी आपकी classes हुई थी, remember we constructed a literary timeline. Remember how we constructed a literary timeline? हमने स्टार्ट किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, देन वी, जिसको हम एंग्लो सेक्सन भी बोलते हैं, देन वी वेंट ऑन टू मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन. फिर आपकी एज ऑफ चौसर आई थी. एज ऑफ चौसर के बाद हमने बीच में एक एज करी थी, उसके बाद वी सेड देयर इज द एज ऑफ एलिजाबेथ एज वेल, है ना. उसके बाद आपकी जेकॉबियन एज आ जाती है. जेकॉबियन एज के बाद आपकी कैरोलिन एज आती है, ठीक है. उसके बाद आपका रेस्टोरेशन आ जाता है, ऑल दैट, राइट. सो वो जो कंस्ट्रक्ट की थी हमने क्रोनोलॉजी, वहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है. द करेक्ट आंसर हियर एग्जैक्टली द एज ऑफ एलिजाबेथ. देखिए, क्वीन एलिजाबेथ ascended the throne in 1558 and died in 1603. So this period in the history of English literature is called the Elizabethan age. अब एडवर्ड एल्बर्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि लिटरेचर के टर्म्स में अगर आप यही एज देखोगे तो यू कैन से 1550 से लेकर 1630 कैन बी कैटेगराइज्ड एज द एज ऑफ एलिजाबेथ. दिस इज योर करेक्ट आंसर. द एलिजाबेथन एज रेफर्स टू द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रेन which lasted from 1558 till 1603 when she died, ठीक है. This is considered one of the most important golden ages in the history of English literature, in the history of England as well, ठीक है. The English Renaissance जो आपका दूसरा ऑप्शन है, ये आपका जो पीरियड है, बेसिकली रेनेसांस हैपेंड इन डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स. इंग्लैंड में रेनेसांस जो हुआ था, दैट बिगैन इन इंग्लैंड इन द लेट 15th सेंचुरी एंड वेंट अप टू द 17th सेंचुरी. जो आपकी एज ऑफ मिल्टन है वो 1625 से 1660 तक जाती है. एज ऑफ चौसर विल कम फ्रॉम 1340 टू 1400, फ्रॉम 1340 टू 1400, ठीक है. ये आपके रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आ जाते हैं. ओके, चलिए, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, आई थिंक. येस, नाउ जिस थ्योरिस्ट के कोट के साथ हमने सेशन स्टार्ट किया था, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी भी है बाय द वे, ठीक है. 15th October मार्क्स हिज बर्थ एनिवर्सरी. हिज नेम इज Paul Michel Foucault, simply called Michel Foucault, born on 15th October 1926, was a French historian of ideas and philosopher who was an author, literary critic, political activist and teacher. Now you need to tell me, how did Michel Foucault died? क्या, क्योंकि इनकी जो डेथ है काफ़ी famously known है because of the way he died, right? There was a very famous way in which he died. How did Michel Foucault die? What did Michel Foucault die of? The question is,
व्हाट डिड मिशेल फुको डाई ऑफ? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? In the comment section, I've been observing a lot of you have not been doing the homework. In the comment section, I want your names, and along with your names, even if you don't want to put your names, it's okay. Just put down your answer. Just put down your answer, ठीक है? How did or what did Michel Foucault, the very very important French thinker, how did he die? How did he die? Because today happens to be his birth anniversary. Please remember, this is French theorist, ठीक है? Chali, that will be all for today's class. Thank you for joining in, everyone. Those of you who are answering in the chat box, I would like your answers to be in the comment section instead, ठीक है? Let me also remind you, जैसे आपका UGC NET का कोर्स रन करता है सेम मैनर में लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में आपका HPSC का कोर्स भी रन करता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड में, ठीक है? यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में मिलती हैं, प्लस यू गेट द PDF नोट्स ऑफ ऑल योर क्लासेस, जितने भी आपके मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, PYQs हैं, उसका एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है? ये जो आपका कोर्स है ये अभी भी ऑनगोइंग है, रनिंग है. यू कैन गेट एनरोल्ड इन द कोर्स. यू कैन यूज़ माई कोड AYESHAK, ठीक है? इस कोड को यूज़ करके यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर फ्री प्राइसेस. ऑलराइट, all right, that will be all for today's class. Thank you for joining in, everyone. We've had a slightly longer session. हम क्या किया करेंगे, there are two things जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के लिए. First of all, जैसे आज हमने डिस्कस किए हैं, besides the main option जो आपका आंसर हो जाता है, we will also discuss all the remaining 3 options. ये आपका next class onwards ये होने लगेगा, ठीक है? जो remaining 3 options हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे. And secondly, now onwards we will also have a poll question. हर डे आपका क्या होगा, every day you will have question of the day on your telegram channel. So make sure telegram channel पे जो question मैं पूछती हूँ उसको आप आंसर करें. Like yesterday I asked you the question about Nobel Prize winner of 2024. तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज कुड बी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर December 2024 साइकिल. सो मेक श्योर टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है? मैं पोल डाल दिया करूँगी एवरी सिंगल डे. All right, thank you for joining us, students. I'll see you people at you have a master class at 2 PM. Yeah, you have a master class. तो हम master class में क्या करने वाले हैं, सेम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं. 2 PM you have a master class which are basically your free classes, ठीक है? ये आपकी फ्री क्लासेस है. कहाँ पर होंगी? On the app of Testbook. Where will you get the link? You can simply go to the description box. That is where you will find the link, or you can simply subscribe to the Telegram channel. वहाँ पे भी आपके पास 20 minutes पहले लिंक आ जाएगा, ठीक है? All right. Thank you, students. Thank you for joining in. I will see you very soon. Till then, keep studying and good luck.